So we are going to discuss about the trachea and esophagus. So here is a clinical question. पढ़ो इसको and note the keywords. The age of the patient, symptoms, so what you can conclude from this case, that biopsy is a confirmative test for malignancy. And malignancy of the esophagus is common at the lower end. Barium swallow is a test to check the patency of the lumen of the esophagus. Difficulty in swallowing or dysphagia is a symptom of malignancy of lower end of esophagus. So we will try to find out what are the regions of the malignancies to occur at the lower end of the esophagus. What is extent, length and functions of esophagus? We will find out what are the structures which are related to esophagus and can cause dysphagia other than the malignancy of esophagus itself. Like the aortic arch which is related to the esophagus, if this arch is dilated, the portion of the arch is dilated, it is called as aortic aneurysm. It may compress the esophagus and can cause dysphagia. So first let's discuss about the trachea. So starting point of trachea and the esophagus is
they start from a same anatomical level. तुम बच्चे बाहर आ जाओ दोनों. Yes, दोनों girls. Take your bag. Leave the class. No sorry, no excuse. Take your bag and leave the class. ऐसे नहीं होता. Repeatedly मैं ऐसे नहीं कर सकता कि आपको कि ठीक है कोई नहीं जाने दो. अगर आपको क्लास की वैल्यू नहीं है तो हमें आपकी कोई वैल्यू नहीं, बिल्कुल नहीं. So trachea extends from the cricoid cartilage, and the vertebral level it is the C6. Same is also correct for the esophagus. Esophagus also starts from the pharyngoesophageal junction at the level of C6. Here you can see the thyroid cartilage and the cricoid cartilages of the larynx. So the vertebral level of the cricoid cartilage in the anterior midline, cricoid cartilage lies at the level of cervical 6th vertebra. And with respect to the cervical vertebrae, the vertebral column, again trachea terminates at the T4. At the T4. This extension is taken with respect to cadaver. In living beings, in some books it may be written as T6 because of some sort of extended neck or in standing position. In standing position. This point, here you can see this transverse broad lines. These are the rings, the cartilaginous rings of trachea. So trachea is actually a fibromuscular tube. Fibromuscular means there are muscle fibers. This muscle is called as trachealis. And fibro means fibrocartilage, the cartilaginous rings, the incomplete rings of trachea. So these rings, which are horizontal in position, they prevent the kinking of the trachea during the various movements of the neck and the thorax or the thoracic vertebrae. They prevent the bending or kinking of the trachea. At the level of T4, which corresponds to the attachments of the second rib anteriorly to the sternum, called as sternal angle, this tracheal cartilage bends at the bifurcation of the trachea. This point is called as carina. C-A-R-I-N-A. Then it bifurcates into two, the right and left principal bronchus. The left bronchus enters directly into the lung without any branching, while the right bronchus divides into two. So this is the extension of the trachea. Length is 10 to 15 centimeter. Diameter is approximately 2 centimeters. External diameter. While if you take into the lumen, just consider the lumen, it is around 12 mm. At the newborn, the diameter of trachea is just 3 mm. The internal diameter is just 3 mm. At the age of 5 years, it is 5 mm. And it increases with age at the maximum of 12 mm, which is adult size. So the laryngoscope, which is a metallic tube which is used to intubate a patient in case of respiratory obstruction, maybe because of trauma
or any other viral infections of the upper respiratory tract when the upper respiratory tract is swollen up too much that it prevents the inhalation of the air. We have to go for intubation. Intubation is just a procedure where a metallic tube is inserted into the trachea to make it easy for the air into the lung. So these tubes, the endotracheal tubes, are of different size, 5 mm, 6 mm, depending on the age of the child or the patient. These are the relations of trachea. You can see the trachea in between the esophagus and the great vessels, between the esophagus and great vessels. Like anteriorly it is the arch of aorta, then this arch of aorta comes left to the trachea and esophagus, and finally it descends and comes posterior even to the esophagus. You can notice the position of the pulmonary artery. This pulmonary trunk of the pulmonary artery, right pulmonary and left pulmonary. These are the principal bronchus, right principal and left principal bronchus. The superior vena cava, the right brachiocephalic vein, and the branches of arch of aorta. From superficial to tip, these are the more superficial structures other than the pulmonary artery and trunk. So pulmonary artery and its right and left pulmonary artery and trunk, they are more closely related rather than the arch of aorta or the superior vena cava to the trachea. They are more closely related to the trachea and its bifurcation. Posterior and the lateral relations of the trachea. Posteriorly it is the esophagus. ये क्या है? ब्लू कलर जो ब्राउन कलर में दिख रहा है, that is esophagus. To the right side, here you can see the zygous vein, the right vagus. To the left side, it is thoracic duct. So notice the course of thoracic duct. In abdomen or the lower part of the thorax, you see towards the right side of the esophagus, then crosses the esophagus posteriorly and comes to the left side of the esophagus. This relation will also help you when you draw the relations of the thoracic duct. ठीक है, thoracic duct पहले क्या है, राइट साइड में esophagus और trachea के, then उसको उनको posteriorly क्रॉस करती दोनों स्ट्रक्चर को, then come to the left side. thoracic duct दिख रहा है इसमें ग्रीन कलर का ही. This is a lymph tube. This is a lymph tube. It drains the lymph from the cisterna chyli, a bag of lymph in the stomach, up to the left subclavian vein. Here the aortic arch has been removed. यहाँ पे क्या कर दिया, आर्च ऑफ एओर्टा को रिमूव कर दिया. ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी और उसकी जो दोनों ब्रांचेज उनको भी रिमूव कर दिया. You can see the transverse section of the aortic arch at the left to the trachea and esophagus. The other thing to be noted is the recurrent laryngeal nerve, which is a branch of vagus nerve and supplies the larynx. So recurrent laryngeal nerve in case of right side, it arises from here, from the vagus nerve at the right brachiocephalic.
यहीं से टर्न हो रही, लेफ्ट साइड में देखो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व का कोर्स, ठीक है, इट गोज मोर इंफीरियर विद रेस्पेक्ट टू द राइट रिकरेंट लेरिंजियल। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस जब आप लेरिंग्स पढ़ेंगे हेड एंड नेक में तब उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बताएंगे। इन दोनों की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। राइट रिकरेंट लेरिंजियल curves round the right brachiocephalic trunk. When the left recharyngeal nerve goes down, when the left vagus goes down and turns from the arch of aorta, curves around the arch of aorta. So now come to the esophagus. As you can see, esophagus here, it is starting from the pharyngoesophageal junction, where a muscle known as cricopharyngeus forms the upper sphincter of the esophagus. Esophagus का जो starting point है वहीं पे एक sphincter है, and that remains closed normally. Normally esophagus is deflated, ठीक है, उसकी जो walls होती है they are stick to each other. It is not dilated in normal position. It gets dilated only in case of deglutition. So it starts from the cricopharyngeus at the same level of the trachea, C6, and ends at the cardiac orifice of the stomach. Length is approximately 25 centimeter and extension is from C6 to T11. T11. कुछ उसमें T10 हो सकता है. T10 is the level where the esophagus pierces the diaphragm. जहाँ पे esophagus diaphragm को pierce करके abdomen में आता है, that is T10. जहाँ stomach को join कर रहा है, it is T11. ठीक है. Approx length is 25 centimeter, out of which 4 centimeter is cervical part of the esophagus, in between the C6 and the supraesternal notch, at the superior border of the manubrium. So this 4 centimeter part is cervical part of the esophagus, and the next 20 centimeter is thoracic, and just 1 or 2 centimeter part which is in between the level of T10 and T11 after piercing the diaphragm and getting attached to the or continuing into the stomach is 1 or 2 centimeter part. So here you can also notice two things. One is the direction of its descent. It descends to the left side. Can't descend or is left side. So the lower end lies left to the vertebral column. The second thing is a muscular sling, a sling of muscles of the diaphragm is attached to the lower end, and that muscular sling is coming from the right crest of diaphragm. Diaphragm पे एक separate class होगा, ठीक है. डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फुल क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट नोट्स में फ्रीक्वेंटली जो आता है दैट इज ओपनिंग्स ऑफ द डायफ्राम, वेरियस ओपनिंग्स ऑफ डायफ्राम. आज के लेक्चर से जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में आता है दैट इज कंस्ट्रिक्शंस ऑफ इसोफेगस, वेरियस कंस्ट्रिक्शंस ऑफ esophagus and their clinical importance. ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है डायरेक्टली ऐसे ही लिखा होता है, कंस्ट्रिक्शंस ऑफ esophagus, 5 मार्क्स कंस्ट्रिक्शंस ऑफ esophagus. तो आपको सिर्फ एनाटॉमिकल कंस्ट्रिक्शंस मेंशन नहीं करने, उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी लिखनी. So from the upper incisor teeth up to the cardiac end of stomach, there are 4 constrictions.
their distance is measured from the upper incisor teeth. अपर इंसाइजर से मेजर करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कंस्ट्रिक्शन दैट इज एट द कमेंसमेंट ऑफ द इसोफेगस, ठीक है। फेरिंगो इसोफेजियल जंक्शन जो है वो सबसे पहला कंस्ट्रिक्शन मीन द नैरोनेस इन द ल्यूमन, ठीक है। फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन कहाँ आ रहा है, जहाँ पे इसोफेगस स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इंसाइजर टीथ, ठीक है। नेक्स्ट कंस्ट्रिक्शन where the arch of aorta crosses the esophagus, that is called as aortic constriction. This 22 centimeter from the incisor. Then next is 5 centimeter away from the aortic constriction. That is the where the left principal bronchus crosses the esophagus. The last one is at the junction of the esophagus and stomach, that is around 40 centimeter from the incisor teeth. तो ये चारों कंस्ट्रिक्शंस का लेवल और इनका डिस्टेंस इंसाइजर टीथ से ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कंस्ट्रिक्शन, these are the sites where the foreign bodies can lodge, ठीक है। गलती से कुछ बच्चे ने निगल लिया तो ट्रेकिया में भी जा सकता है, इसोफेगस में, तो इसको फॉरेन बॉडीज यहाँ पे स्टक हो सकते हैं। सेकेंड थिंग, जब आप राइल्स ट्यूब डालते हैं, जैसे ट्रेकिया में हमने क्या डाला, एंडोट्रेकियल ट्यूब, स्टमक में क्या डालते हैं, राइल्स ट्यूब, द फीडिंग ट्यूब, ठीक है। तो राइल्स ट्यूब डालते हैं, यू शुड नो अबाउट दिस कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। जहां पे भी आप राइल्स ट्यूब डाल रहे हैं और रेजिस्टेंस फील हो रहा है, रेजिस्टेंस अगर फील हो रहा है तो आपको राइल्स ट्यूब को दोबारा वापस थोड़ा सा हल्का सा ऊपर लेके और धीरे धीरे उसको पुश करना, अदरवाइज यू विल इंजर द म्यूकोजा, ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंस ये हो गया। तीसरा हो गया, these are the commonest sites of stricture. स्ट्रिक्चर क्या होता है, इंजरी के बाद फाइब्रोसिस, इंजरी हुई, इन्फ्लेमेशन हुआ और वहां पे फाइब्रोसिस हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रिक्चर। एंड फोर्थ वन इज कॉमनेस्ट, दीज आर कॉमनेस्ट साइट ऑफ मेलिग्नेंसी, मेलिग्नेंसी के भी साइट है ये। कोरोजिव सब्सटेंस जो, जैसे कि किसी ने KOH पी लिया, ठीक है, सुसाइडल टेंडेंसी, जनरली सुसाइडल ट्रेंड में लोग करते हैं ना, तो ये जो साइट्स हैं चारों कंस्ट्रिक्शन की, यहाँ पे वो लिक्विड जो भी वो सब्जेक्ट पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है, उसमें वो स्ट्रिक्चर्स हो जाते हैं, कोरोजिव सब्सटेंस, इन्फ्लेमेशन होता है और वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाता है। तो ये इनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। Then the tracheoesophageal fistula. ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला के केस में क्या होता है, देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, के पीछे रीजन क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। में इमेज में तुम देख रहे हो अपर एंड इसोफेगस का ब्लाइंड है, ठीक है, लोअर एंड या लोअर पार्ट इसोफेगस इज कनेक्टेड टू दी ट्रेकिया, so during intrauterine life what happens is the trachea develops from the foregut, जो गट की ट्यूब होती है, ठीक है, एंडोडर्मल जो ट्यूब है गट का, जिससे GIT डेवलप हो रहा है, इसमें फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फोरगट से इसोफेगस एंड स्टमक एंड इनिशियल पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम डेवलप होता है। So upper part of foregut anteriorly gives a pouch which develops into the respiratory system, वो पूरा आपका ट्रेकिया और ब्रोंकस और ब्रोंकाई बनाता है, ठीक है। दिस इज नॉर्मल प्रोसेस, फोरगट से ही डेवलप हो रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा, जो ट्री है रेस्पिरेटरी ट्री। और उसके बाद जो दोनों का कनेक्शन है
वो ऑब्लिटरेट हो जाता है। ठीक है, दोनों का कनेक्शन क्या होता है, ऑब्लिटरेट हो जाता है। बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बॉडी में आप देखेंगे, जैसे डक्टस वेनोसस, डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ऑब्लिटरेट हो जाता है। इन केस अगर वो ऑब्लिटरेट नहीं हुआ कम्युनिकेशन, तो क्या होगा, पेशेंट या न्यूबॉर्न या फिटस, जो भी वो ड्रिंक करेगा या ठीक है खाएगा या फीड करेगा बच्चे को, वो उसके ट्रेकिया में भी जाएगा, वो उसके इसोफेगस में भी जाएगा, बट उसको क्या होगा, वॉमिटिंग, कफिंग। ठीक है, इंट्रायूटाइन लाइफ में क्या होगा कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जनरली एमनियोटिक फ्लूइड का जो साइकिल होता है, जैसे एवरी फ्लूइड एज ए साइकिल ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो सर्कुलेशन होता है वो यही होता है। फिटस जो होता है वो उसको डिग्लूटीज करता है उसके, ठीक है, जीआईटी में जाता है फ्लूइड। ठीक है, और फिर उसके जो फिकल मटेरियल के थ्रू वो मैटरनल जो फ्लूइड है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड में वापस है। एमनियोटिक फ्लूइड का सर्कुलेशन इसी तरह से होता है। तो अगर इसमें ऑब्स्ट्रक्शन है सर्कुलेशन में, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, इस केस में क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो यूएसजी में या सोनोग्राफी में अगर पॉलीहाइड्रेमनियोज आ रहा है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, तो दिस कैन ऑल्सो बी ए साइन ऑफ ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। बहुत सारे कोज होते हैं वैसे पॉलीहाइड्रेमनियोज के, बट उनमें से एक कोज क्या हो सकता है, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला एक कोज हो सकता है। आफ्टर डिलीवरी बेबी को प्रॉब्लम क्या होगी कि इसको कफिंग रिफ्लेक्स होगा, वॉमिटिंग। ठीक है, जैसे मदर फीड करती है तो वॉमिट होता है, सीवियर कफिंग रिफ्लेक्स आता है। So that is all about the trachea and esophagus. बहुत शॉर्ट टॉपिक हैं दोनों, और दोनों के जो है ना फिक्स आपके क्वेश्चन हैं। इसोफेगस में इसोफेजियल कंस्ट्रिक्शंस में पूछते हैं आपसे। ठीक है, रिलेशंस जनरली नहीं आते क्वेश्चन रिलेशंस के। इसोफेगस में इसोफेजियल कंस्ट्रिक्शन, ट्रेकिया में ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला बहुत कॉमन आता है। दूसरा ट्रेकियल जो रिंग्स हैं उनका अरेंजमेंट, ट्रेकियल रिंग्स क्या, दे आर सी शेप कार्टिलेज, कंप्लीट लूप नहीं बनाती। ठीक है, दैट इज व्हाई पोस्टीरियर वॉल ऑफ ट्रेकिया इज एक्सपेंडेबल, पोस्टीरियर वॉल पे डेफिशिएंट है कार्टिलेज। ठीक है, so these two tubes which are arranged in anterior posterior direction means most anteriorly trachea then esophagus, they can compress each other in case of malignancy. ठीक है, अगर इसोफेगस की मैलिग्नेंसी है या ट्यूमर है, ओवरग्रोथ है, तो वो डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन भी क्रिएट कर सकता है। और अगर लेरिंग्स का कैंसर है पोस्टीरियर पार्ट का, तो वो डिस्फेजिया भी क्रिएट कर सकता है। तो 3 फैक्टर्स दैट कैन कॉज डिस्फेजिया, एक तो हो गया मैलिग्नेंसी, अदर वन इज द एओर्टिक एन्यूरिज्म, aortic aneurysm, or the localized aneurysm is the localized dilatation of a vessel, especially artery, that is because of improper development of the tunica media. ठीक है, मिडल लेयर जो है वॉल की, आर्टरी की। lymphatic drainage of stomach, so the upper part of stomach drains into the deep cervical node. The middle or the thoracic part may drain into the lymphatic nodes at the hilum of the lungs, and from the lower part they drain into the celiac node.
celiac trunk is a major arterial channel which arises from anterior part of the aorta. ठीक है, एओर्टा जब क्रॉस करता है, पियर्स करता डायफ्राम को, उसके बाद जो फर्स्ट मेजर ब्रांच है, बड़ा जो आर्टीरियल चैनल है, दैट इज सीलियक ट्रंक. एंड सीलियक ट्रंक सप्लाइज ब्लड टू द स्टमक, स्प्लीन, लीवर, गॉल ब्लैडर, इनिशियल पोर्शन ऑफ द डोडेनम. ठीक है, तो लिम्फ नोड्स का जो क्लासिफिकेशन या नेमिंग है वो अकॉर्डिंग टू रीजन होता है. अगर सीलियक ट्रंक के आसपास लिम्फ नोड्स हैं, उसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स जो मैंने बताई वो लिम्फेटिक ड्रेनेज उनका हो रहा है, दे आर कॉल्ड एज सीलियक नोड्स. तो सीलियक नोड्स में लोअर पार्ट ऑफ स्टमक ड्रेन करता है. जनरली कार्सिनोमा या मैलिग्नेंसी लोअर एंड ऑफ इसोफेगस की ही होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में. ठीक है, so you have to remove the lower part of the esophagus along with celiac node and the other structures or the organs which drains into the celiac node, like the stomach, left lobe of the liver, spleen, they all have to be removed. And the esophagus is directly connected to the jejunum, so esophagojejunostomy is done. ठीक है, समझ गए. तो हमने साइट ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर हमने देख लिया. इसोफेगस पेशेंट को जो सिम्टम्स होते हैं वो शुरू में यही होता है, वॉमिटिंग. ठीक है, क्योंकि लोअर एंड क्या हो गया, ट्यूमर की वजह से पूरा नैरो हो गया. ठीक है, तो उसमें अब जो फूड पार्टिकल्स या जो फूड है वो पूरा डिसेंड नहीं होता स्टमक तक. ठीक है, जैसे वो खाता है पेशेंट, थोड़ी देर बाद उसको वॉमिट हो जाता है. फ्रीक्वेंट वॉमिट होगा तो वेट लॉस भी होगा, और मैलिग्नेंसी के लेटर स्टेज में वेट लॉस एक कॉमन सिम्टम है, चाहे कोई भी मैलिग्नेंसी किसी भी टाइप की. बट इसोफेजियल ट्यूमर्स में ये शुरू में ही हो जाता है. ठीक है, फीमेल्स में कॉमन है और लेटर एजेस में. रीजन जो है दैट इज एंजाइटी. जो लोअर एंड ऑफ इसोफेगस का एपिथेलियम किस टाइप का है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज, और स्टमक का सिंपल कॉलुमनर. जो एसिड सिक्रेशन है स्टमक का वो क्या होता है, रिफ्लक्स होता है. क्या होता है, रिफ्लक्स होता है. रिफ्लक्स मीन जो इसोफेगस और स्टमक के बीच का स्फिंक्टर जो है उसको एसिड क्रॉस करके ऊपर जाता है, लोअर एंड ऑफ इसोफेगस, और फिर उसको इरिटेट करता है म्यूकोजा को. म्यूकोजा क्यों इरिटेट हो रही है, क्योंकि जो लोअर एंड ऑफ स्टमक की म्यूकोजा वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है, उसको आदत नहीं है एसिडिक एनवायरनमेंट. ठीक है, तो म्यूकोजा पहले इरिटेट होती है, फिर उसका मेटास्टेसिस होता है. मेटास्टेसिस मीन्स it converts into simple columnar and then there are neoplastic changes, means tumor या malignancy के जो changes होते हैं. तो इनिशियल स्टेज में जब बहुत कॉमन डिजीज है ये, GERD बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जो स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से होता है. ठीक है, तो जनरली फीमेल्स में ये ज्यादा होती है 40-50 ईयर्स के अराउंड एज में. ठीक है, जब बच्चे इस एज में हो जाते हैं कि 20-25 ईयर्स के, तो फादर जो कि इंडियन फैमिली सिस्टम एक डोमिनेंट पोजीशन पे होते हैं, उनमें कन्फ्रंटेशंस होते हैं. एंड मदर इज ए पिलर ऑफ स्ट्रेंथ. वो चाहती है कि सब होल्ड करके सब लोग ऐसे रहें. तो ये बहुत कॉमन फीमेल्स में इसीलिए कॉमनली होता है क्योंकि उनको स्ट्रेस या एंजाइटी ज़्यादा होती है. ठीक है, और वो भी लेटर एजेज में. शुरू में जो रिफ्लक्स डिजीज है दे हैज टू बी हैंडल्ड बाय ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इवन इन इनिशियल स्टेजेस. ठीक है, शुरू के स्टेज में ही आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाओ. ठीक है, जो डीएम है गैस्ट्रो. अगर आप लोकल ट्रीटमेंट लेते रहेंगे पेशेंट, तो क्या होगा कि धीरे धीरे म्यूकोजा मेटास्टेसाइज हो जाएगी और
लेटर एज में अगर रिपोर्ट करते, ज्यादातर केस लेटर एज में ही रिपोर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद मेटा, तब तक ट्यूमर जो है फैल चुका होता है, मेटास्टेटाइज हो चुका होता है. So that was all about the trachea and esophagus.